Hello, hello, good evening. See, we continue this topic, Lagrange's mean value theorem. And today we are going to discuss a very important problem like tan inverse, cos inverse, and tan inverse problems we have to discuss. Now look at the tan inverse problem. Can you hear me? Yes, Hello? sir. Okay, yes, please reply. Yes, sir, I can hear you. Yes. This is the question. If A is less than B, is this screen is visible for you? Yes, sir. Everything clear now? Let us have a Yes, patience. sir. Very important class we are discussing. You may get the question out of anyone from the today's class. We don't have any f of x in our question, so we are considering. Let us assume that f of x is equal to tan inverse of x. Because our question is completely in terms of time, we take tan inverse of x. Interval is not there, so we are considering a comma b will be the interval. Now, condition number 1 and condition number 2 of what Lagrange's mean value theorem we have to check. F of x is continuous. F of x is continuous on closed interval a comma b. As I said so many times, we need not to check about the continuity. Every time this function will be continuous only. Now, second condition, we have to find out the derivative. Remember, the derivative of tan inverse of x will be equal to direct formula 1 by 1 plus x square. So we say so exist. So exist on open interval a comma b. So now clearly we say condition number 1 of condition number 2 of Lagrange's mean value theorem will be satisfied. So we write here, since f of x satisfies all conditions of Lagrange's mean value theorem, यहाँ पर लिखेंगे, since f of x satisfies all conditions of, come on, you should tell me, Lagrange's mean value theorem, then there exists a point, or also we say at least a point C belongs to a comma b such that, what's the formula? Have you remembered that? F dash of C is Yes, sir. equal to, come on, f of F b. dash of C equals to F of B minus F of A by B minus A. Yes, f of b minus f of a by b minus a. And okay, this is taken as equation number 1. Now we use this condition because already we know that since C belongs to a comma b, it means that the value of C should lie between a and b. Now we make it this format. एक काम करेंगे, एक और स्टेप लिखेंगे इसका. We should write one more step for this because we need to replace their values. F dash of C is nothing but 1 by 1 plus C square. And we should not take this as equation number 1. F of B means it is tan inverse of B. F of A means it is tan inverse of A. And B minus A as it is. This is we take as equation number 1. Now after this one, we use the concept that is C belongs to A comma B concept, we use it. Since C belongs to A comma B, actually mathematically we say this, the meaning of this one is the value of C should lie between A and B, and we make it this format: squaring, one adding, and reciprocal. A square is less than C square, B is less than B square. We do it one by one, okay? Direct step nahi karna. 1 plus A square is less than
1 plus c square is less than 1 plus b square. Now if you take the reciprocal, it is 1 by 1 plus a square. Less than will be changes to greater than because we are taking reciprocal. 1 by 1 plus c square is greater than 1 by 1 plus b square. After that, 1 by 1 plus c square value, we know that from the equation number 1 is 1 by 1 plus a square as it is greater than, this value is already, we know it is tan inverse of b minus tan inverse of a by b minus a is greater than 1 by 1 plus b square. After that, multiply b minus a on both sides. Multiply b minus a on both sides. B minus a by 1 plus a square is greater than tan inverse of b minus tan inverse of a. If you multiply b minus a on both sides, this b minus a will be cancelling and it will be on both sides. B minus a by 1 plus b square. Let us just change the order. A is greater than b can be written as b is less than a. It means we change the complete direction of this inequality. B minus a by 1 plus b square. Inequality का direction को change करेंगे. Greater than will be converted to less than. Tan inverse of b minus tan inverse of a is less than b minus a by 1 plus a square. This one part of this problem will be proved. You see, this one we have proved. Here, b minus a by 1 plus b square part we proved. Now we have some deductions. These two results. So एक result इसमें का मैं कर दूंगा. एक आप करना. Number 1, result number 1. Okay. So in this equation number 2 only, we have some substitution. What is that? In place of b and in place of b a, we have some substitution. अब question arise होता क्या लेना है, b क्या लेना है. See what to prove. Tan inverse of 4/3 prove करना है ना. तो our b value is this bracket value. मतलब b value है 4/3. b value is 4/3. Now a value is equals to, अब यहां पर देख सकते हैं आप क्या प्रूव करना है वो देखो. ये pi/4. So tan pi/4 कितना होता? Tan 45 degree is 1. So a value is 1. So a value is 1. In this equation number 2, if you put b value 4/3 and a value 1, क्या होता देखो. 4/3, get ready with the calculator. Minus 1 by 1 plus b square. B square means 16/9 is less than tan inverse of b value is 4/3 minus tan inverse of a value is 1 is less than b minus a means 4/3 minus 1 by 1 plus a square. A square means 1 square is 1 only. इसको आप कैलकुलेट करके बोलिए मेरे को आंसर कितना हो रहा है. ये पूरा का पूरा कैलकुलेटर से करना, करके बोलना. Sir, I don't have calculator, but the first value is 1 by 3 by 25/9. So we can cancel it. So it's 3/25. Okay. yes. आप कर लो, बाद में वेरीफाई कर लो. Tan inverse of 4/3 Yes, sir. 3/25. Yes, sir. minus this part we do it in your rough column. Tan inverse of 1 can be written as tan pi/4. So tan and inverse cancel. So pi/4 is left here. Less than, this value is 1/6 after simplifying. ये minus pi/4 को cancel करने के लिए दोनों साइड pi/4 ऐड करना. So we add pi/4 here plus 3/25 is less than minus pi/4 plus pi/4 will be cancelling here. Tan inverse of 4/3 is less than pi/4 will add it here plus 1/6, which is our first result. अब सेकंड रिजल्ट के लिए मैं खाली आपको हिंट दे देता हूँ. सेकंड रिजल्ट के लिए आपको क्या करना है, जस्ट ओनली द हिंट विल बी गिवन.
for the second result, what you have Sir, to do? can you scroll up once, sir? Huh? Can you Yes. scroll up once? Please tell me what happened. Can you scroll up once, sir? Okay, okay, The okay. ending part. One Okay, doubt. okay. Yes. सर यहाँ पे -π/4 निकाल रहे करके लेफ्ट LHS ये लेफ्ट और राइट में भी π/4 ले लेना सर, हाँ, ये एक तो स्टेप मैं आपको माइनस प्लस कर देना डिटेल सर. करके बता देता हूँ. नो प्रॉब्लम. वेट फॉर सम टाइम. लेट अस सी व्हाट आई एम डूइंग हियर इज tan inverse of 4/3. Already -π/4 is there, so we are adding +π/4. For every term we are adding π/4. पूरा इनइक्वालिटी में ऐड कर रहे हैं. These two are cancelled. ओके सर. Now the Okay, second sir. result, to prove the second result, what to prove? You see, we have to prove that tan inverse of 2, मतलब b value is 2, a value is the same π/4 is है. So now to prove the second result, just I am giving the hint. B सर value is सर सेकंड वन में B वैल्यू 2 और A वैल्यू one प्लस only, 2/4 लेना. Sin π/4 is 1 only. Okay, ये आप करो. सर A का वैल्यू कैसा है एक बार फिर से बोलते सर आप. π/4, π/4 उसमें है, क्वेश्चन में हर जगह है. यहाँ पर देखते हैं, दिख रहा है यहाँ π/4. यस सर. करके बता दो. ओके सर. ओके सर. लेट मी डू इट. b minus a by 1 plus b square. यहाँ पर इसको फिर से एक बार लिख देता हूँ. b minus a by 1 plus b square is less than tan inverse of 2 is less than b minus a by 1 plus a square. So what here we are doing is put b value is 2, Okay, a sir, value is understood. 1. So it is b minus a 2 minus 1 by 1 plus b square plus 2 square is 4 is less than, अरे सॉरी ये tan inverse of 2 लिख दिया मैं. tan inverse of b minus, ये तो प्रूव करना है. tan inverse of b minus tan inverse of a आना. tan inverse of a is less than b minus a by 1 plus a. Just put down these values. We get tan inverse of 2 minus tan inverse of 1 again. ये कैलकुलेटर में रखे तो tan inverse of 1 डायरेक्ट π/4 आ जाए. b minus a, दोनों साइड b minus 6 है. दैट्स व्हाट, दोनों साइड 2 minus 1 ही आएगा. 1 plus a square is 1/1. तो ये कितना हो गया? 1/5 हो गया. करेक्ट. इज लेस देन tan inverse of 2 minus it is π/4 after simplifying is less than 1/2. So to cancel this minus π/4, we have to add plus π/4 on both sides. तो π/4 ऐड करेंगे इधर प्लस π/4 में, plus 1/5 is less than tan inverse of 2 minus π/4 plus π/4 cancel. We need not to write that step. π/4 plus 2 plus 1/2. Here the LCM is 5 4 the 20 is the LCM. 4 5 का मतलब pi plus 5 4 का मतलब 4 less than tan inverse of 2 is less than 4 is the LCM. 5 plus 2. That's your required final answer. जो प्रूव करना था वो करें. राइट, देख लीजिए स्टार्टिंग. यहाँ पर है आपका क्वेश्चन, ये वाला आपका क्वेश्चन. राइट, हो गया ना प्रूव. तो अब आप वापस से ये पूरी शीट की फ्रंट साइड में आ जाएंगे. यहाँ पर है देखिए क्वेश्चन में साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स के क्वेश्चंस. अभी ये क्वेश्चन है खाली प्रूव दैट है. कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसा मेंशन कर देता, अगर नहीं करा तो आप अंडरस्टूड हो जाना. यूजिंग
Lagrange's mean value theorem. Okay, so f of x is not there. We have taken f of x is because it is related to cos. We have taken cos. इंटरवल नहीं है, क्लोज इंटरवल ए कामा बी, तो कंटिन्यूअस, ये तो cos का कंटिन्यूअस हो जाएगा. उसके बाद डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. cos इनवर्स ऑफ एक्स डेरिवेटिव -1 by अंडर रूट 1 minus x स्क्वायर. सो एग्जिस्ट f of x satisfy all conditions of Lagrange's mean value theorem. Then there exists a point C. प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही करना है, सिमिलर एज इट इज. इसके बाद देखिए C बिलोंग्स टू ए कामा बी का कॉन्सेप्ट यूज करना है यहाँ पर. इसको देखो, आप ऑलरेडी मैं करा था, फिर से एक बार आपको बोले तो मैं बता देता हूँ. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, माइनस से मल्टीप्लाई, वन ऐड, रूट ले लिए, रेसिप्रोकल करें, माइनस करें. अब ये स्टेप में स्क्वायरिंग करें, ये स्टेप में माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी चेंज होता, लेस देन से ग्रेटर देन होता, राइट. उसके बाद वन ऐड करें, नो चेंज. स्क्वायर रूट लिए, नो चेंज. पर रेसिप्रोकल में फिर से इनइक्वालिटी चेंज होता, ग्रेटर देन विल बी लेस देन. फिर माइनस से मल्टीप्लाई करें, फिर इनइक्वालिटी चेंज. जहां जहां पर मैं राइट मार्क डाल रहा हूँ ना, वहां पर इनइक्वालिटी चेंज हुआ. Yes, sir. चलिए उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे. रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे डायरेक्ट, कि cos इनवर्स ऑफ b माइनस cos इनवर्स ऑफ a बाई b माइनस a. तो मल्टीप्लाई b माइनस a ऑन बोथ साइड्स, माइनस को ऐसे रख के ये ऑर्डर चेंज हो जाता. अब आपको सब्स्टिट्यूशन करना है. सब्स्टिट्यूशन के लिए ब्रैकेट की वैल्यू कभी भी जो भी क्वेश्चन में प्रूव करना है वो ब्रैकेट की वैल्यू. देखो क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, 3/5 प्रूव करना है, तो b की वैल्यू 3/5 ले लिया. अब a की वैल्यू का क्वेश्चन अराइज होता तो क्वेश्चन में रहता उसका आंसर भी. देख लीजिए, यहाँ पर दिख रहा आपको 5/3, ये वाला, ये देखो ये Yes, sir. दिख रहा ना. तो cos 5/3 यहाँ लिख दिया. Yes, sir. cos 5/3 वैल्यू इज नथिंग बट cos 5/3 इज 1/2. सो a इज इक्वल टू 1/2. तो ये a वैल्यू b वैल्यू दोनों सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप यहाँ पर. ये आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया कि cos इनवर्स कैंसिल, 5/3 को ऐड करने के लिए दोनों सेट 5/3 सब्ट्रैक्ट कर, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट तो ऐड कर, और द आंसर. यही स्टोरी साइन में हो रही. देखो साइन प्रूव करना है. f of x is sin इनवर्स ऑफ x क्लोज इंटरवल कंटिन्यूअस. इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें. f of x satisfy all conditions is, ये फिर a बिलोंग्स c बिलोंग्स टू a कॉमा b का कॉन्सेप्ट यूज करें. फिर यहाँ पर देखो a इज लेस देन c, स्क्वायरिंग करें, माइनस से मल्टीप्लाई करें, वन ऐड करें, स्क्वायर रूट करें, रेसिप्रोकल करें. उसके बाद उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें. फिर जो वैल्यू प्रूव करना था, ब्रैकेट की वैल्यू 3/5, तो b भी 3/5 हो गया. क्वेश्चन में यहाँ पर a वैल्यू यहाँ पर दिख रहा, देखो ये वाला. इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको. साइन π/6, साइन 30 डिग्री, इट्स 1/2 is the value of a. So our a value is 1/2. So we have to take our a value is 1/2. इसमें रखो, सब्ट्रैक्ट करो, खत्म करो. साइन कॉस tan, ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन डिस्कस करें आज, ठीक है ना. Yes, sir. साइन कॉस Yes, tan sir. के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन डिस्कस करें. आप ये पीडीएफ का प्रिंट आउट ले लो, आपको नोट्स लिखने का जरूरत नहीं. ठीक है, ये कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर अभी Okay, sir. अभी तो अपना क्या बोलते हैं, थोड़ा टाइम है तो अपन एक क्वेश्चन प्रॉब्लम्स ऑन कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम भी कर देंगे. स्पेस भी है ना, Okay, sir. और टाइम भी है. यहाँ पर मैं हेडिंग लिखता हूँ, प्रॉब्लम्स ऑन कॉचीज मीन वैल्यू. आपका कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट शायद अपन नहीं देखे, तो पहले स्टेटमेंट देखिए. Okay, sir. पर हेडिंग लिखेंगे कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम. कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम. सो लैग्रेंज में ज्योमेट्रिक मीनिंग की जरूरत है, रोड्स में ज्योमेट्रिक मीनिंग की जरूरत है. बट कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम देयर इज नो नीड ऑफ ज्योमेट्रिक मीनिंग, उसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी नहीं है. तो यहाँ पर देखो उसका स्टेटमेंट क्या होता है. स्टेटमेंट, व्हाट इज द स्टेटमेंट. लेट, अभी तक अपन एफ ऑफ एक्स भी फंक्शन बोल के बोले ना, यहाँ पर एफ Yes, sir. कॉमा जी दो फंक्शन है. आर
टू फंक्शंस f भी है g भी है, f comma g are two functions such that how they have some special properties like the previous two theorems. f comma g are दोनों भी है देखो, हाँ खाली f नहीं, both f comma g are continuous. f comma g are continuous on close interval a comma b. Now second condition is f comma g are डिफरेंशिएबल बोलो या डेरिवेबल बोलो आपका मर्जी, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कामा बी. रोल्स थ्योरम में तीन कंडीशन है, लैग्रेंज थ्योरम में दो कंडीशन है, फिर कॉचीज में तीन कंडीशन है. g dash of x should not be 0 for all x belongs to a comma b. मतलब a कामा b में से कोई भी एक वैल्यू लेके g डैश में सब्स्टिट्यूट करे तो आंसर 0 नहीं आना चाहिए. ठीक है, g डैश ऑफ x का आंसर 0 नहीं आना, डेरिवेटिव अपन करेंगे g डैश का तो 0 नहीं आना. देन Okay. देन देयर एग्जिस्ट, स्टेटमेंट एग्जाम में आ रहा देखो इसलिए लिख रहा हूं मैं, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c belongs to a comma b open interval a comma b such that important formula will come now, f dash of c by g dash of c, f dash of c by g dash of c is equal to f of b minus f of a by g of b minus g of a. This is our statement of Cauchy's mean value theorem. Only statement is enough. Proof भी है बट ज्योमेट्रिक मीनिंग इसकी जरूरत नहीं है. तो अपन कुछ प्रॉब्लम भी देखेंगे, अभी अपने पास टाइम तो है ना, तो वी हैव टू सी सम क्वेश्चंस हियर. ओके, तो क्वेश्चंस कैसा आता है एग्जाम में, नेक्स्ट पेज पे देखो. उस टाइम नहीं है पेजेस की. Now first question, find C of Cauchy's mean value theorem. Find C of Cauchy's mean value theorem. On close interval a comma b for f of x is equal to, अभी तक अपने क्वेश्चन में खाली f of x रहता था, अब यहाँ पर f of x भी रहेगा, g of x भी रहेगा. f of x is equal to e power x and g of x is equal to e power minus x. ओके, ये आपका क्वेश्चन. कॉमा a comma b must be greater than 0. So now we have to prove this question. Sorry, not proof. We have to verify. Means we have to get the value of c. Solution. पहले तो आपके पास f of x क्या है भाई? f of x is equal to e power x है, comma g of x क्या है भाई? g of x we have e power minus x. So exponential function तो continuous ही होता. Okay. डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे. f dash of x is equals to e power x का डेरिवेटिव e power x ही होगा. g dash of x, the derivative of e power minus x must be minus e power minus x. Minus e power. ठीक है ना, तो we have to write here Yes. therefore f comma g are continuous and differentiable
on close interval a comma b and open interval a comma b respectively. हो गया ना, दो ही कंडीशन है इसमें, दो ही कंडीशन है क्या इसमें? Sir, yes, sir. हाँ नहीं, Third जी condition is डैश also ऑफ एक्स G की dash. वैल्यू 0 नहीं आ रही, देखो आप। Yes. कंडीशन नंबर 3 भी सेटिस्फाई हो गया। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कामा b, a कामा b में से कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना, मतलब 1 2 ले लो, सब्स्टिट्यूट करो, आंसर 0 नहीं आता, e पावर -2 नहीं आता 0, राइट? ओके, तीनों कंडीशंस भी हो गए, f कामा g कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, और थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। तो देयरफॉर बाय Cauchy's mean value theorem, there exists a point, C belongs to A comma B. We are going to find out C only, such that we have to write the formula. Have you remembered that formula? Just now we wrote f dash of C by F dash of C by G dash of G dash C of C equals is to equal to f of B F of B minus F of A minus by f G of B minus G of A. by G of B minus G of A. So look at that, put the value e power x, f dash of C e power C child, g dash of C मतलब minus e power minus C आया, is equal to f of B. F of B means e power B minus f of A means e power A. G of B means e power minus B minus g of A means e power minus A. करेक्ट हो जा रहा हूं मैं, है ना? बराबर जा रहे हैं। एक फॉर्मूला बेसिक क्लास Yes, sir. पढ़े थे, देखो आपको याद है या नहीं याद है, आई डोंट नो। a to the power of minus m अगर हो रहा, we write it as 1 by a power m। Yes, sir. पावर नेगेटिव है तो 1 by फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब e पावर c माइनस को ऊपर कर देंगे, डिवाइडेड बाय e पावर माइनस c कैन बी रिटन एज 1 by e पावर c ना, है ना? e पावर b माइनस e पावर a, Yes, sir. e power b minus e power a divided by e power minus b can be written as 1 by e power b minus 1 by e power a. Now we take the LCM of the denominator. Please don't take easy these problems, and these classes are very helpful. Minus first fraction will be same, second fraction will become reverse. E power c by 1 no need to write, is equal to this numerator will be as it is. Denominator, if you take the LCM, e power b into e power a will be the LCM, and if you simplify, you get here e power a minus e power, Minus C power. right? फिर से ये फ्रैक्शन को रिवर्स कर Yes, देंगे, माइनस एज इट इज, bases are equal, power should be added 2c. Here we take minus common लिए तो ये न्यूमरेटर का ऑर्डर चेंज होके e power a minus e power b into सेकेंड फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगा, e power b into e power a divided by e power a minus e power b. All these problems are just very important. All I am just solving with my experience. बुक में से देख के कॉपी नहीं कर रहा हूँ। Minus and minus cancel. These two values are completely cancelled. E power 2c is equal to, again bases are equal, power should be added. A, B, bases are equal, power should be added, means A plus B. A Cancel plus B B. on both sides. 2c is equal to A plus B. Okay. Then what is C? Yes, sir. C is equal to A plus B by A plus B by 2. definitely belongs to the interval a comma b when a and b both are greater than 0. एग्जाम्पल दे दो मैं आपको, ग्रेटर देन 0 तो 1,2 ले Yes. लो, 1,2 की एवरेज Yes. वैल्यू 1.5 आती, डेफिनेटली बिलोंग्स टू द इंटरवल, है ना?
So hence, Yes, sir. please, Sir, why is it greater than 0? greater than Why is it greater than 0? क्वेश्चन में दिया दिया आपको चेक करने के लिए। देखो क्वेश्चन पढ़ो, वेर ए कामा बी हाँ, ग्रेटर yes, sir, got it, में got दिया, it, got it. वेरिफिकेशन Yes, sir, करते got it. ऐसा। Yes, तो sir. ये क्वेश्चन है आपका कंप्लीट हो गया है। कितना टाइम है? और एक क्वेश्चन भी हो सकता है, और एक क्वेश्चन भी हो सकता है, और एक क्वेश्चन होता है, सेकंड क्वेश्चन। और देख कौन चीज मेन वैल्यू थ्योरम, मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में लिख देता हूँ। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है यहाँ पर क्वेश्चन में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कॉमा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos x, and the interval will be 0 comma pi by 2. We have to verify Cauchy's mean value theorem and we have to find out the value of c. ठीक है ना? तो डायरेक्ट सोल्यूशन करेंगे, आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम। सोल्यूशन f of x and g of x है तो डायरेक्ट f dash of x, डेरिवेटिव ऑफ sin x is cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x is minus sin x, and which is not 0 for all x belongs to 0 comma pi by 2. So therefore f comma g are continuous and differentiable on closed interval a comma b and open interval a comma b respectively. So now by Cauchy's mean value theorem, there exists a point C belongs to a comma b such that, what's the formula? F dash of c by g dash of c is equals to f of b minus F of b minus f of a a by by g of b minus g of b minus g of a. एक्चुअली इसके प्रूफ को आपको डिस्कस करना है। कॉचीज और लेग्रेंजेस के प्रूफ इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पूछ रहा वो भी, so we don't want to neglect that. f dash of c की वैल्यू होती है cos c minus sin c is equals to f of b. f of b means f of pi by 2 minus f of a means f of 0 by g of b means g of pi by 2 minus g of 0 means 0. Now this is minus cos by sin is cot c is equals to f of pi by 2. What is f of pi by 2? Sin pi by 2, sin 90 degrees 1 minus f of 0, sin 0 is 0 divided by cos g of pi by 2. Cos pi value is 0 minus cos 0 value is 1. ये कैलकुलेटर में भी आ सकता है आपको, आप चेक कर लो। तो फाइनली get minus cot c is equal to 1 by minus 1 is nothing but minus 1 only. Minus and minus cancel. Cot c is equal to 1 can be written as cot pi by 4. Cot 45 degree 1 होता. Cot and cot cancel. C is equal to pi by 4 and definitely belongs to the interval 0 comma pi by 2. So what do you say? Hence Cauchy's mean value theorem verified. ये हो गया आपका वेरिफिकेशन। और अगर आपको करना है इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, तो मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप इसका, f of x इज इक्वल टू, अगर आप कर रहे नहीं
आप दूसरे होमवर्क कर रहे तो नहीं? एक्स स्क्वायर Sir, जीरो I was busy going to hospital, sir. I didn't solve. Tomorrow, व्हाट वाज will वर्क I इज have देयर class tomorrow, sir? टुमारो? आई कांट से एग्जैक्टली, मेरा थोड़ा शेड्यूल कभी कभी, आज ही मेरा इरादा नहीं था क्लास लेने का, बट आप फोन कॉल करें तो मैं नहीं लेना, वो तो सवाल ही नहीं होता। इसके लिए मैं कैसा भी एडजस्ट करके ले रहा हूँ। एफ ऑफ Thank you, एक्स sir. इज Thank you इक्वल्स for टू, that. कल भी मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ, मगर अगर कुछ डिस्टरबेंस रहे तो बोलिए। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x, और यहाँ पर इंटरवल है ए कॉमा बी, ये हो गया 4। और एक क्वेश्चन, एक टॉपिक पे आप मिनिमम 5 क्वेश्चन अगर कर लिए तो बेहतरीन हो जाता आपका काम। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू log x, g of x is equals to 1/x। ये करे तो क्या होता मालूम है? तो डाउट आता, अगर नहीं नहीं वेरीफाई नहीं हुआ तो, हो गया बोले तो आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। ये दो चीजें हैं, आपको आ गया तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता, नहीं आया तो आपका डाउट क्लियर हो। Yes, sir. ठीक है, तो Sir, कॉची यूनियन थ्योरम tomorrow, इज ओवर। most probably. यस, Okay, sir. Sir, most probably Monday would be the last time I would be going to hospital, sir. Tuesday, Wednesday, I'll solve. Thursday, for sure, I'll ask doubts, sir. I'll solve all the questions. I'll ask doubts. we'll keep Thursday only the doubt class। Okay, sir. और पीडीएफ भिजा दो, पीडीएफ को मैं यहाँ पर स्क्रीन पे रख के क्या है क्लियर कैसा है पूरा मैं आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है ना? तो थैंक यू Okay, फॉर sir. दिस क्लास, क्लास इज ओवर नाउ। ये पीडीएफ मैं आपको Thank सेंड you, करता sir. हूँ, Thank you. पीडीएफ का प्रिंट निकाल लेके पढ़ लो आप। ठीक है, सर मेरे को पूरे क्लासेस के वीडियोस होना सर। आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख लो, लिंक है आपके पास? नहीं है सर, मेरे को प्लीज मैं लिंक शेयर सेंड करो कर, ना। अभी लिंक सेंड करता हूँ। All ओके the सर। classes are already recorded. It is available. Most probably 360 videos are there in YouTube. खाली वो YouTube देख के पढ़ लिए तो भी आप पास हो जाते। ठीक है, राइट, नो प्रॉब्लम। We'll end up ओके सर।